Good morning and warm welcome to you all. I am Vaibhav, your host for today. Our topic for today is numerology and vastu shastra for industrial factories. It shall be taken by CA Vomesh Patak. He shall cover how to transfer your life, followed by question and answer session. Our agenda for today is virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Mr. Vomesh Pathak, question and answer session, and last closing session. About Sadgun Sangh conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals
on possible solutions to current issues of industry and economy. Let's know more about Dr. Sundar Kataria. Designation and organization, Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. His academic qualification, Doctorate in Business Management, followed by Mechanical Engineer. His experience are Rajasthan Atomic Power Project, India's first power plant RAPP at Rawalpata, Kota, built by Indian engineers. Work as nuclear scientist for 11 years and successfully completed and commissioned the plant. Engineers India Limited, first batch of engineers to develop Bombay High offshore oil and gas fields, mega offshore complex platform, trunk and submarine pipelines, underwater inspection and indigenization oil and gas equipment, etc. Det Norsec Versatiles, world's largest classification society, worked for 17 years at various capacity for the certification of fixed offshore installations, submarine pipelines, onshore projects, and personnel qualification. ICS. He is founder of India's first certification conformance assessment body established in the year 1999, provider of total quality solution. Certification of management system, ISO, inspection, testing, and training qualification of personnel. His achievements and awards are receive Lifetime Achievement Award for the contribution for the corrosion technologies from NACE International by NIGIS under NACE USA. Social worker, protection of life, asset, environmental and safety. So now I request Dr. Kataria sir to please virtually inaugurate the session. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. Introduction of our today's keynote speaker. Designation and organization, heads the direct tax and TP litigation team at Capgemini. His academic qualification, BCom, MCom, and Chartered Accountant. Area of specialization and experience, recently awarded Top 30 Numerology Arjuna Award of India. CEO, authored various books on international tax and direct tax. Mentor with CA Monk and ICAI for qualified CAs. He has been Vice Chairman of Law and Representation Committee of CTC for 4 years. Numerology, Rudraksh and Vastu coach. Please welcome Umesh sir. Over to you, sir. Okay. Pathak sir, are you there? Yes, I am very much here. Good morning, everyone. Thank you, first of all, Dr. Sundar sir and team for inviting me for this gathering and addressing the audience on numerology and industrial vastu, which is again a unique topic and very much close to my heart. So, Sundar sir, I just need one input from you. While we have two topics, numerology as well as industrial vastu, how much weightage should we give to each of them, and which is more important, more relevant, so that I can focus accordingly, considering the limited time that we have? Because I can go on and on, but I need to respect the time. Yes, sir. Good morning. Yeah. Very good morning. Umesh Pathak ji, it is a very important topic. Of course, when it came to me for a general topic, then I suggested, because we international certificate services,
is the India's first national certification body. We started long back in 1999. Okay. And if I connect my name and the name of the company and the year we started, so I can say this has helped us to grow. So I Correct. thought this topic is very important because this knowledge has been very ancient knowledge in India. Yes. And True. unfortunately, we have lost in between with the modern world. So thanks for reminding and bringing this topic Thank you. because I have seen when we started long back in a number of industrial estate like Vapi, like Bilimora, many places in Karnataka, in Rajasthan. Then we saw within 5 years the company closed down. Yes. I don't know what is the reason. There was an intention to grow, but then they could not grow. Correct. So I think something is to related to the location, the location of machineries, plants, or location of a name, the time, auspicious time to start, Yes. and how they treat their people also has to be important. Correct. So this is the little knowledge which I have. Yeah. And my True. experience, I thought I can True. give my peace of mind. Yeah. Thank you very Sure. much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. So as sir rightly said, we have two topics today, numerology and vastu. Both play a very important role. Both play a very vital role. So my today's agenda or my today's idea is to give you a glimpse of both so that you can be self-sufficient to have the basic knowledge of the same. One about numerology, how to prepare your own birth chart, how to calculate your own strength, weaknesses, etc., so that you don't need any external support or external guidance in terms of going to a jyotish or going to a consultant or going to any other baba pandit or even a numerologist, as a matter of fact. So that is the idea. Then obviously, secondly, as I said, we move on to industrial vastu. As sir rightly said, it is very important to understand where should I place my machinery, where should I place my raw material, where should I place my finished goods, where should I have the chimneys, etc., so that the entire functioning of the factory premises in such a way that not only the organization grows, the owner grows, but also the employees grow, the workers grow together. So with that background in mind, let us start with the numerology first. Is there anyone who knows numerology from the ICS team, or of course I have few of my team members also here, but otherwise, is there anyone who knows numerology or has heard about it? May raise your virtual hands. No, great. Sir, there is one answer is in chat box. Okay. Deepti madam is there. Chalo, great. Okay, cool. So, Deepti madam, let me know if I go wrong anywhere, right? I'll need your support. Okay, chalo, cool. So let us start with numerology first. So what is numerology? It is nothing but it is science of numbers, the magic of numbers. We are born on a particular date of birth. हमारा जब birth हुआ, so I'll mix Hindi and English, right? So it goes well. I hope that's okay, right? So when we were born on a particular date, right? So that is a particular number, right? So for example, today is 17th August. The total of the date, if I do 1 plus 7 comes to 8. If I do the entire total 17th August, that is 8 again, it will come to 6, right? So if you do the sum total of the entire date today, it will come to 6, right? So both these numbers, 8 as well as 6, will have significance for today's date, right? So what is numerology? It is nothing but it is science of numbers, studies the date of birth and name spelling. So this is what we do in numerology. We study the date of birth and name spelling. It is a tool to gain deeper insights, a deeper knowledge of your own self, others, and how do we relate to the world at large, right? Because many a times it is basically, it helps you first to know your own self. सबसे पहले तो खुद को जानिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है,
where is it that you can do well, which profession you can do well. If you know that well in advance for yourself or for your kids, then life becomes much easier. Otherwise it may happen that if you are in a wrong profession, howsoever hard you work, that may not help you. We see many a times people working very hard, but they are not that successful, right? They often complain कि इतना मेहनत करने के बाद भी क्रेडिट कोई और लेके जाता है, इतना मेहनत करने के बाद भी आई एम नॉट सक्सेसफुल, others go ahead of me. So how do I overcome this particular problem? Quite a common problem, right? So you should know your own self, others, as well as how to relate with the world at large. Used to determine one's own personality, strength, weakness, opportunity, and threat. So we'll discuss for each number what are your strengths, what are your weakness, what are your opportunities, so that you get to know that you get to know better about your own self, and you get to know that uh, how good you are at particular things, or how where you need improvement. So basically, what happens is we generally know others well. For example, we know our family members well, we know our spouses well, we know our employees well. At times it happens that we don't know our own self. हमको खुद को हमारा खुद का नॉलेज नहीं होता है, या खुद के बारे में इतना पता नहीं होता है कि भाई मैं ऐसा क्यों हूँ, right? Or I don't know my own strength, that is why I am struggling at times. So if I know my strength, if I know my weakness, I can do much better in my life. So I can do that with the help of my numbers, with the help of my date of birth, and of course my name spelling, which plays a very, very vital role. Right, it can help you literally reinvent yourself. Let me tell you, I'm a chartered accountant by profession. I am into this profession since 16 years, and after I learned numerology, after I learned vastu, after I learned rudraksh, my life has changed 360-degree, right? Practically speaking, I'm giving you my own example. My life has literally changed 360-degree, right? And of course in the positive side, not in the negative side. Numerology predictions can fascinate you, right? It can literally fascinate you. And if you know numerology, if you are in a room where where you know something in numerology, or I know something in numerology, and people will come to you for your guidance, people will come to you, you will be literally a celebrity in the room. So that is the beauty of numerology and the numerology predictions, right? Merely by looking at the date of birth, within 40 to 45 seconds, I can gauge what that person will be, how that person will be, how that person's life will be. And that is the beauty, right? Within 45 seconds, if you can gauge that, it really looks like a miracle, or it looks like a magic to others, right? So if you know some bit of numerology, I'm not saying even if you don't know full numerology, even if you know some basics, after today's session itself, you can try this, you can work this out at your home, along with your friends, with your relatives, etc., right? You will be really mesmerized with the results. You will be really mesmerized with the analysis which you will do, not me, which you will do with your own self, with your family members. You can unleash your true potential with the help of numerology, right? This is what my aim is, to help people unleash their true potential. And I am on an agenda, or I would say I am on a mission to expand numerology, vastu, etc., to across the globe. And fortunately, I have been fortunate enough to serve clients across the globe till now, right? And it has literally changed the lives, not only in my own case, but for all my clients as well. It covers all relevant aspects. Now, what are the relevant aspects of my life? Career, money, paisa, सबसे पहले vitamin M. Then relationship with my family, with my spouse, with my employees. Health, again, very important. And last comes spiritualism. So it covers all the aspects of my life, right? Problem solving technique. Let me tell you, this is not a magic. This is full of logic. I always believe in logic and not magic. This is a problem solving technique and not at all a superstition. This is a problem solving technique. And I have one motto, or I have one tagline: no dar ka business, right? You might have seen people doing dar ka business in India, specifically when we see शनि की महादशा चल रही है, राहु केतु वक्री है, राहु गलत स्थान में जाके बैठा है. So effectively, you are living in a fearful world, or whenever you approach any particular consultant or ज्योतिष or whatever, शनि के नाम से डराते हैं. शनि की महादशा है, शनि की साढ़े साती है. Then you have
राहु उच्च का नहीं है, राहु नीच का है, केतु नीच का है, so therefore your career is getting stuck. But what is the solution? Do you give me the solutions? Are even after applying those methods, will I be able to solve these problems? Right? I have no comments on it. So therefore, as far as numerology is concerned, I being a consultant, I purely believe in problem solving techniques, not just finding the problem. Obviously, step one is finding the problem. Once you find the problem, it is half problem solved, because problem क्या है कभी कभी हमको वही नहीं पता होता. So we first of all find what is the problem and then solve the problem. That is the beauty of numerology, right? And the solutions which we give in numerology are very much practical, very much simple, which does not involve much of your time, which does not involve much of your cost. It is very much cheaper as far as the remedies is concerned as compared to any other science. Planning the timing, right? New beginnings, as sir said, maybe they started the business at the wrong time, maybe they started the factory at the wrong place, right? So when to start, where to start also is important. Planning or timing new beginnings. I want to start my new business, I want to change my job, I want to get married, I want to get into relationship, which is the right year for me, right? How to time the decisions in my life. So matchmaking, again, marriage or partnerships. When I talk about matchmaking, it is not just marriage, but also business partnerships. Right? So this is what we do with the help of numerology. That first of all, can I do well with this person personally if I'm planning to get married? Secondly, if I'm planning to get into partnerships, first conclusion should be whether can I do partnership. There are some date of births where I always say you should avoid partnership, because there are chances of cheating, there are chances of fraud, and I have seen 90% of cases, 95% of cases where uh, if I say that there can be a chance of fraud, then either the fraud has already happened in the past, then the person has come to me, or later on there may be a situation where he doesn't listen to me and there is a fraud, and then he comes back to me, sir आपने बोला था fraud होगा, आपने बोला था cheating हो गया मेरे साथ. Selection of name of a business venture, right? Very, very important. There are certain businesses, there are certain names which go very well. For example, Geo, if you see, I'm sure 90% of the people in the room will have one SIM card of Geo. दूसरा वोडाफोन होगा, एयरटेल होगा, कोई भी होगा, पर दूसरा जो नंबर है, एक नंबर जियो का होगा इस सबके पास, मेजॉरिटी, right? So Geo, if you see the name spelling, the total is coming on 9, which is a very auspicious number as far as Hindu culture and the Indian culture is concerned, right? So therefore, if you take the name spelling on the right number, which is compatible to your date of birth, which is compatible to your birth chart, then your life becomes much easier, your business becomes much easier, right? Name spelling for a newborn baby, very, very important. When you have a newborn in your house, that is the right time when you should have the proper name spelling rather than going for name spelling correction, right? If you see my own name spelling, VYOMESSH. Initially my name spelling was VYOMESH. I changed my name spelling because I wanted to bring it to a favorable number, so therefore I had to add one S, right? Now, had my family knew, had my parents knew numerology earlier, or had they consulted, उस time पे तो numerology इतना था भी नहीं when I was born, but still, had they consulted someone, maybe they could have taken my name to a better number right from the beginning. So you can do it in your family, you can do it for the next generation to come. Name spelling correction, जैसे मैंने बोला, मैंने खुद ने किया हुआ है. You see many celebrities, Ajay Devgan, right? Irfan Khan, Ayushman Khurrana, many celebrities, they have changed their names, and you can see how successful they are after changing their name. I can give you one live example. Ajay Devgan, right? Prior to his name changing, all his movies were getting flop. Once he changed his name spelling, AJAYDEVGN, right? Devgan में से A निकाल दिया, Ajay Devgan, that is how he writes now, DEVGN. उसके बाद he started his own production house. उसके बाद सिंघम आया, उसके बाद उसका गोलमाल रिटर्न्स और वो सब मूवीज हिट जाने लगे, right? So literally you can see that success in his life. Ritesh Deshmukh initially used to write his full name Ritesh Deshmukh, right? And later on, if you see, he removed his surname. Okay, he is just using Ritesh now. And with that correction, you are seeing his Marathi movies, his Hindi movies, everything
are going successful, were going successful. His business is now very much successful, which he is doing now. So therefore, name spelling correction plays a very, very important role. It plays literally 40 to 50% impact on your life, because see, your date of birth remains the same. आप जिस दिन पैदा हुए वो दिन तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो डेट आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? आप क्या चेंज कर सकते हो इज ओनली योर नेम स्पेलिंग. आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, विच इज योर नेम स्पेलिंग. So quickly, if I can guide you with denotion of numbers, we have 9 planets, right? 9 planets and 9 numbers, 1 to 9, right? 0 has no value as such, right? Unless 0 is after a particular number, otherwise 0 has no value. So therefore, if you see 9 planets, 1 to 9, number 1 is ruled by sun or Surya, right? I have given a story tagline, that is keyword or attribute, just to remember the relationship between the numbers, right? So number 1 is sun or Surya, which we call it as king. Number 2 is moon or Chandra, that is we call it as queen in layman's language, or just to understand. Number 3 is Jupiter or Guru, we call it Dev Guru or counselor. Number 4 is Rahu, we call it daredevil or chor in layman's term, Robin Hood, जो अमीरों से चोरी करता है और गरीबों में बांटता है, रॉबिन हुड. Number 5 is Mercury or Buddh, which is prince. Number 6 is Venus, Shukra, Daitya Guru Shukracharya, counselor, but again on the other side, on the negative side, Shukracharya, right? Daitya ka guru is Shukracharya. Number 7 is Ketu, Ketu is shadow or wisdom, right? Number 8 is Shani, Saturn, जिसके नाम से इंडिया में डर का बिजनेस होता है, जज. Let me tell you, Shani is not a fearful planet. Shani is one of the fairest planet. Fairest is in the terms like, if you do well, if you work hard, and if you are doing your duty or role properly, Shani will literally give you the benefits. थोड़ा लेट देगा, but Shani जब देगा तब चप्पड़ फाड़ के देगा. Therefore I am saying judge. Shani will always do justice. Shani will always do justice. Number 9 is Mars, that is Mangal. Mangal is again a very strong planet and a fierce planet, right? Mangal is very strong and a fierce planet, which is we call it Senapati or Commander in Chief. We call it Senapati or Commander in Chief, right? Sorry, I had to take this, it was urgent. Okay. So let us look at characteristics of number and let us make it interactive, right? We have around 50 people in the room, 45 people in the room. Let us make it interactive, and you know your own date of birth. You know your own date of birth, right? So I will need your support, your input in the chat box to write whether you can resonate with this, with the characteristics, with the features which I just discussed. Can you see yourself in any of these brackets or these features in you? Yes, no in the chat box, please, once I discuss, right? So let us make it interactive rather than a monologue. So people who are born on 1st, 10th, 19th or 28th of any month, they are ruled by number 1, that is sun. They are ruled by number 1, that is sun. So कोई भी इंसान जो किसी भी महीने की, any month, if they are born on 1st, 10th, 19th or 28th, they are born by number 1. अब number 1 ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग कैसे होते हैं? They are pioneers, they are leaders. To give you example, Mukesh Bhai Ambani, Dhirubhai Ambani, Ratan Tata, all these are pioneers, right? They are the leaders in their field, and they have done something uniquely, something differently in their own field, right? So they are leaders. Royal, they are very much royal, right? Authoritative, they like things their way. एक नंबर वाले जो लोग हैं, my way और highway, मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. ये उनका एक नेगेटिव ट्रेड भी हो सकता है और कभी कभी पॉजिटिव ट्रेड भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी उनको अथॉरिटेटिव भी होना पड़ता है व्हेन एट वर्क प्लेस, व्हेन एज अ बॉस, राइट? ईगोइस्टिक,
एक नंबर वाले लोग जो है वो कभी कभी ईगोइस्टिक हो सकते हैं। तो इनके प्लस पॉइंट क्या है? पायोनियर, लीडर्स, रॉयल। और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एक, ये लोग ईगोइस्टिक हो सकते हैं। दूसरे, दे कैन बी अथॉरिटेटिव। सो इज देयर एनीवन इन द रूम हु इज born on 1st, 10, 19 or 28 in the chat box? Can you resonate? No one? Okay, so let us move on to the next date. Number 2, if you are born on 2, 11, 20 or 29, if you are born on 2, 11, 20 or 29, you are born by number 2, that means moon. You are ruled by number 2, that is moon. अभी moon क्या है? एक शांत planet है, gentle planet है, right? It is gentle, slow. Number 2 people, these people are good hosts. They are very good hosts. They like to host people. They like to feed people with good food, etc. They like to cook for people, etc., etc. They are king makers. ये लोग खुद राजा नहीं होंगे, बट दूसरे को राजा बनाएंगे, राइट? इफ यू नो चाणक्य, चाणक्य खुद कभी राजा नहीं बने, बट चाणक्य वॉज अ किंग मेकर. ही गाइडेड चंद्रगुप्त मौर्य, ही गाइडेड हिम टू बिकम द किंग, राइट? सो दीज पीपल आर किंग मेकर्स. दे हेल्प देयर पीपल टू ग्रो इन देयर लाइफ. ठीक है? चार्मिंग पर्सनालिटी होती है इनकी. इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो चार्मिंग पर्सनालिटी होती है. Okay, please repeat for number 1. Okay madam, I'll come back to number 1 once I finish number 2. Okay, या सो नंबर 2 वाले जो लोग हैं वो चार्मिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं. पर इनका प्रॉब्लम ये है, इनका प्रॉब्लम ये है कि दे हैव अ फ्लक्चुएटिंग माइंड और अ कंफ्यूज्ड माइंड. कभी कभी इनका माइंड जो है वो कंफ्यूज रहता है. क्योंकि इफ यू सी, मून क्या है? चंद्र है. चंद्र क्या होता है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, राइट? बिकॉज मून इज अ प्लैनेट. मून इज अ प्लैनेट वेयर फ्रॉम न्यू मून डे टू पूर्णिमा 15 डेज जो है वो चंद्रमा छोटे से बड़ा साइज होता है. फिर बाद में पूर्णिमा के बाद साइज बड़े से छोटे होते जाता है. टिल अमावस्या इट इज नो मून डे वेयर देर इज नो मून एट ऑल इन द स्काई, राइट? तो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है. इसीलिए मेरा माइंड जो है वो भी फ्लक्चुएटिंग रहता है. कभी मूड अच्छा है, कभी मूड अच्छा नहीं है. दे आर वेरी सेंसिटिव. सेंसिटिव मीन्स दे कैन गेट हर्ट इजिली. 2 नंबर वाले जो लोग हैं उनको कभी भी आप मस्ती करो, कभी चिढ़ाओ, तो उनको आग से गंगा जमना कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी रो सकते हैं. या सो दे आर वेरी एक्सप्रेसिव ऑल्सो. वो लोग प्यार भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे और अपना दुख व अपना गम जो है वो भी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे. स्पेसिफिकली दोज पीपल हु आर born on 11th, दे आर ड्रीमर्स बट दे मे नॉट बी डूअर्स. मतलब इनके सपने जो है वो बड़े बड़े होते हैं, इनके सपने जो है वो बड़े बड़े होते हैं, राइट? पर वो सपनों पे काम नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, और वो सपने अल्टीमेटली सपने ही रह जाते हैं. इट इज वेरी गुड टू हैव ड्रीम्स, but you should work on your dreams to achieve that in the real life, right? So therefore, is there anyone in the room who is born on 2, 11, 20 or 29? है कोई? Yes. So Dipti madam, can you resonate to these features? Most of them, right? There is one person with iPhone. Can you resonate 29? Yes or no? Okay. So let us go back. Udichi madam wants to understand about number 1, right? So number 1, those who are born on 1, 10, 19 or 28, they are pioneers, they are leaders, they are royal, they are authoritative, and they can be egoistic at times, right? So Udichi madam, are you born on any of these dates, or is there anyone Yes, in your sir. family? Yes, sir. 19, 19, 19. September. Okay, great. So can you resonate to this? You want to be a leader, Yeah, very you want much. to lead, right? Okay, great. Chalo. So we move on to number 3 now. Okay. So Dipti madam, you want to share something on number 2 before we move on to number 3?
Okay. ठीक है. So let us go to number 3. Okay. So number 3 means those who are born on 3, 12, 21 और 30. जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्मे हैं, जनरली जो है उनके ट्रेड्स कैसे होते हैं? इनका जो है इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है. दे आर क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव, knowledgeable, they can do very well in drawing, craft, singing, etc. Very creative people, right? Knowledgeable, इनका knowledge बहुत है क्योंकि they are ruled by Jupiter. Jupiter means guru, guru is equal to knowledge. तो नंबर 3 वाले लोगों के पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है. एंड दे आर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस. दे कैन डू वेरी वेल इन एजुकेशन फील्ड. दे कैन टीच अदर्स वेल, दे कैन गाइड अदर्स वेल, दे कैन मोटिवेट अदर्स वेल, दे कैन बी गुड काउंसलर्स. ठीक है. इनका खुद का लाइफ कैसे भी हो, पर ये दूसरों को अच्छी तरह से गाइड करते हैं, राइट? अभी दे आर गुड हीलर्स ऑल्सो. डॉक्टर्स फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी नंबर 3 कैन बी गुड डॉक्टर्स, नर्सेस, anyone in the occult field doing numerology, rudraksh, or reiki, etc. They can be number 3 people can do well in this field. 2 negative traits of number 3, right? You need to understand the negative traits also, so that if you are a number 3 or any number, if you have those negative traits, you should try to overcome that, right? What we do is strength, weakness. So we should know our weakness also, right? So therefore number 3 can be eccentric at times. Eccentric मतलब सनकी हो सकते हैं, कभी कभी उनको गुस्सा आ सकता है, कभी कभी जो है वो उनको राइट, कभी कभी, not always. तो 3 नंबर वालों को जो है वो they can be self-centered. They can be self-centered. It is revolving around their own life, right? And one important aspect of number 3 is they can be good starters but bad finishers. Because when they start with a bang. जब ये लोग कुछ चालू करते हैं, they start with a bang and you feel like, अरे great, this person will do very well in this particular field or whatever they start. But somewhere in between they stop. Somewhere in between they lose their way for whatever reasons, and therefore it might happen that they don't end well. Starting बहुत अच्छा होता है, but they don't end well. Good starters, bad finishers is a tagline for number 3. नंबर 3 वालों को 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए. एक है कि they should avoid alcohol and they should avoid non-veg. ठीक है, क्योंकि नंबर 3 is ruled by Jupiter, बहुत ही ज्यादा सात्विक प्लैनेट है. तो नॉन-वेज और लिकर से आपको परहेज रखनी है, आपको दूर रहना है. सेकेंडली जो है मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है, बिकॉज मेनी टाइम्स नंबर 3 हैज अ हैबिट ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग. उनको मल्टीटास्क करना अच्छा लगता है या मजा आता है. तो देयरफॉर द प्रॉब्लम इज when you do multitask, you tend to lose focus, right? तो इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है वो ये 3 चीज आपको करनी है. अवॉइड liquor, avoid non-veg, and avoid multitasking. Then you can do great in your life, right? So Sundar sir, you are number 3. Do you agree with any of these traits? Right, you have guided many people in the industrial field. You have helped many people. I'll put down. Yeah, I think you have joined from 2 devices. Yeah. Well, I can correlate with all the qualities what you had told. Okay. Definitely. I'm Okay. also quite creative. Yeah. And knowledge, it comes. I'm Yeah. never satisfied. I keep on Yeah, obviously. enhancing my knowledge every day, almost every day. Correct. And spiritual and religious, of course, I have been there from the childhood, but I have been more religious and spiritual of late after 50s, and I could go Himalayas and could go for Correct. trekking. Correct. Almost Great. all the places I could visit. So that is I'm very thankful to God. Yeah. Great. Given me strength, so I Yeah. could climb Kailash Correct. Pansar. Yes. As Great. far as great. education is concerned, Yeah. of course, I believe sharing education and also Yes. enhancing my own education. Correct. And as you say, I started, then went very well. We grew very fast.
but then in between there was slowdown. But Correct. again, and of course, I don't do much multitasking. Great. So if you don't do multitasking, then I should say that that is your plus point and you are in the right track. Yeah. Yeah. And plus also, I'm a vegetarian now. Great. Great, sir. Great. So So thank you for yeah, this inputs, and this really helps the other people also to understand that yes, yeah, numbers really work, and they really see this. We are talking about just the traits of your date of birth. There are other aspects also when we see your entire chart, your entire date of birth and everything. Then picture get very much clearer. But this is just a glimpse purely based on your date of birth, which is 3, 12, 21, or 30, right? So even with this, you can gauge a lot many things. Even if you know a person's only date of birth, you can gauge a lot many things, right? So that is the magic of thank numerology. you. That is the magic of numbers. So going to Thank you, number madam. 4. Yeah, thank you, sir. So going to number 4. Number 4 is Rahu. If you see the photo in the right hand side, Rahu क्या है? उसके पास सर है पर बॉडी नहीं है. Rahu doesn't have his own body. So therefore, Rahu is, if you know the story, Rahu and Ketu were one. Then समुद्र मंथन के टाइम जब वो अमृत पीने गए, they were demons. They tried to, they as in he tried to have अमृत, right? Demeaning themselves as देव. तो तब विष्णु भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र से उनको अलग कर दिया, so that they don't destroy the world, because obviously they were having with negative energy, so they were broken into two. So जो head है, जो सर है, वो बन गया राहु, और जो नीचे का बॉडी है वो बन गया केतु, राइट? सो राहु क्या है? हेड है. हेड मतलब दिमाग, राइट? सर तो है, सर पे क्या होगा? दिमाग होगा. सो दीज पीपल आर वेरी मच करेजियस. These people are very much courageous, sharp-minded, logical. They will always talk logic. They will always talk sense. Is there anyone in the room born on 4, 13, 22, 31? Right? These people are rebellious. Rebellious matlab they don't care about the world. They don't care about the world. Right? Shalini madam is master number 22. Okay? They really don't care about the world. They believe in taking their stand. They believe in taking their position, taking their views and taking it forward. ठीक है? जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है, वहां पे 4 नंबर वालों की सोच शुरू होती है, वहां पे उनका करेज शुरू होता है. They never are a fearful person. They always believe in taking strong stands. To give you live example, Amit Shah is number 4, Sardar Vallabhbhai Patel number 4, right? So all these people are courageous, sharp-minded, logical. They can be short-tempered also. They can be short-tempered also, right? कभी कभी उनको गुस्सा भी आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. Organized and disciplined. These people are always organized and disciplined. They will keep things in their own places. They like things to be neat and tidy. सब अपने अपने टाइम से अपने अपने हिसाब से बराबर होना चाहिए, कुछ आगे पीछे नहीं होना चाहिए. Sudden gain and sudden loss. Sudden gain and sudden loss. इनको एक चीज है, शेयर मार्केट से संभाल के रहना है. If you are trading in share market, number 4, driver or conductor, or rather if you are born in these dates, you should avoid trading in share market, or you should trade only in quality stocks, because वहां पे sudden gain और sudden loss दोनों हो सकता है. एक दिन आपने शायद 1 लाख रुपया कमाया, दूसरे दिन 3 लाख लूज कर दिया, वैसा भी हो सकता है. Impulsive and abusive. Good starter, not bad finisher is a copy paste error, not applicable here. Impulsive and abusive. Impulsive मतलब ये लोग डिसीजन बहुत फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, बहुत बार बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं. Impulsive decision. And they can be abusive. Abusive मतलब गुस्सा आ जाता है उनको, तो कभी भी लोगों को कुछ भी बोल सकते हैं गुस्से में. While they may not mean it, but they might abuse people. They might लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर उनका मन दुखता है. Right? So therefore, that is how it is. Now going to number 5. Is there anyone born on number 5, 5, 14, 23? If you are born on these dates, you should thank God. Literally, you should thank God if you are born on these dates, because you have the master key in your life. Sheetal Niwalkar madam is born on 23rd, right? Because this number 5 is a master key, right? In numerology, we call it as a master key, because 5 नंबर जो है वो सेंटर में आता है, राइट? ऊपर भी 4 नंबर है, नीचे भी 4 नंबर है,
बीच में है नंबर 5. So that is the center of entire numerology. That is the center of your entire life. And if you are born on these dates, you are very much, you have lot of potential. Literally, you have lot of potential, right? You are charming, balanced, master key. As I said, number 5 is the master key in numerology. Brainy, बहुत ज्यादा दिमाग होता है इनका भी. Ever young. These people are always young, irrespective of their age. ठीक है, हमेशा दिल से जवान रहेंगे, हमेशा यंग रहेंगे. डार्क हॉर्स और छुपा रुस्तम. ठीक है, ये लोग दिखेंगे बहुत सिंपल, बहुत सादे दिखेंगे, बट जितने जमीन के ऊपर है उतने जमीन के अंदर भी है. छुपा रुस्तम, उनके क्वालिटीज, उनके फीचर्स धीरे धीरे जब आप उनको जानोगे तब आपको पता चलेगा ये तो छुपा रुस्तम निकला है, ये तो छुपा रुस्तम निकली. राइट. एक ही नेगेटिव ट्रेट है नंबर 5 का, दे कैन बी लेजी एट टाइम्स. So if number 5 people can overcome their laziness, if number 5 people can overcome their laziness, sky is the limit for their success. Sky is the limit for their success, right? Romantic होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा romantic होते हैं, right? Ever young and romantic is their key characteristics. So very good number as far as overall numerology is concerned. फिर आते हैं नंबर 6 की तरफ. Anyone born on 6, 15, 24 in the group, this is for you, right? Charming, romantic, sensuous. In these three in one line, charming, romantic, sensuous, because this is ruled by Venus. Venus is शुक्र. शुक्र जो है वो प्यार का प्लैनेट है. शुक्र जो है वो पैसों का भी प्लैनेट है. ये आपको पैसा भी देता है और रिलेशनशिप भी देता है. So we live in a Shukra Pradhan Yug today because everybody wants money. Everybody wants to be loved, right? सभी को प्यार चाहिए, सभी को पैसा चाहिए. So therefore, number 6 again is a very key number in numerology. I always say that 5 and 6 are the key numbers. If you have 5 and 6 in your date of birth, it means your half battle is won on your birth itself. ठीक है? Charming and romantic, sensuous, family person. These people are really family persons. Shrewd, they can be shrewd and manipulative. मतलब कभी कभी अपना काम निकालने के ये लोग बिना सोचे उंगली टेढ़ी कर लेंगे. सोचेंगे नहीं, बिंदास उंगली टेढ़ी कर लेंगे. उनका काम निकालना है तो साम दाम दंड भेद करके अपना काम निकाल के रहेंगे. ये पॉजिटिव ट्रेड भी है, कभी कभी नेगेटिव ट्रेड भी हो सकता है, राइट? आजकल के जमाने में कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, विच इज फेयर. बट इफ यू डू इट पर्पसफुली टू हार्म अदर्स, देन इट इज नॉट गुड, राइट? And these people are loving in nature. These people are literally loving in nature. They care for their family, they care for their people, right? Moving on to number 7. ये जो नंबर है केतु है, शैडो है. मैंने पहले आपको बोला कि बॉडी जो है वो 7 नंबर है और सर जो है वो 4 नंबर है, right? So these people are also very much religious and spiritual. If you are born on 7, 16, 25, right? You are spiritual, you are religious, you are good in research, you are innocent. Is there anyone here 7, 16, 25? ये लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं. ऑकल्ट मींस न्यूमरोलॉजी, रुद्राक्ष, ज्योतिष एक्सेट्रा, ये सब फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं. दीज पीपल आर ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल. इन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, ये लोग कभी धोखा नहीं देंगे. एंड दीज पीपल गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स ऑल्सो वेरी इजीली. सीक्रेटिव, इनको आप अपना कोई भी सीक्रेट बताओ, लाइफ टाइम तक ये वो सीक्रेट को लीक नहीं करेंगे. यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम. एंड दे आर स्कॉलर्स ऑल्सो. बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, स्कॉलर होते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर बोर्न ऑन 7, 16 एंड 25, यू शुड अवॉइड डूइंग पार्टनरशिप. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ लोगों को पार्टनरशिप्स अवॉइड करनी चाहिए. तो दीज पीपल शुड अवॉइड पार्टनरशिप्स. These people, whenever they are getting married, should do proper matchmaking, etc. because इनको fraud और धोखे के chances हो सकते हैं. नंबर 7 is equal to wisdom. नंबर 7 is equal to fraud also. नंबर 7 is equal to cheating also. आपके केस में cheating हो सकता है. People can betray you. You will not betray people, but people can betray you. And those people whom you trusted the most can betray you, right? तो इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप के टाइम, एम्प्लॉय को हायर करते टाइम और खास करके शादी के टाइम भी, रिलेशनशिप में भी. नंबर 8, दीज पीपल आर गुड इन फाइनेंस. दीज पीपल आर गुड इन फाइनेंस, राइट? नंबर 8 पीपल गुड इन फाइनेंस. लॉजिकल, दीज पीपल आर लॉजिकल. नंबर 8 मतलब कौन? जो इंसान किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को जन्मा है. दीज पीपल आर रूल्ड बाय शनि. शनि मीन्स सैटर्न.
जिसके नाम से हमको डराया जाता है। बट लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ नंबर 8। यू आर गुड एट फाइनेंस, यू आर लॉजिकल, यू आर साइंटिफिक, आप हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, मेरे हिसाब से हार्ड वर्किंग होना आज की तारीख में सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रेट है, नेगेटिव ट्रेट नहीं है। एंड इफ यू वर्क हार्ड, डेफिनेटली यू विल बी पेड वेल एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स समडे। ठीक है, मैं समडे बोल रहा हूं क्योंकि स्लो है, शनि स्लो है, रिजल्ट देने में देर करेगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, पर 100% आपको रिजल्ट देगा। जब शनि देगा, चप्पड़ फाड़ के देगा। इट इज जस्ट दैट आपको हार्ड वर्क करते रहना है, पॉजिटिव रहना है लाइफ में, और डेफिनेटली आपको स्ट्रगल है, आई एग्री देयर इज अ स्ट्रगल, बट रिजल्ट जब मिलेगा तब यू विल बी ओवरवेल्म्ड, यू विल बी सरप्राइज कि बॉस इतना सारा मिल गया, क्या बात है। राइट, ये लोग आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में नंबर 8 वालों से कोई नहीं जीत सकता। इफ यू हैव एनीवन हु इज नंबर 8 अराउंड, उसके साथ आर्ग्यू मत कर लो, छोड़ दो, क्योंकि अगर आप सही होगे तो भी आप वो आर्ग्यूमेंट नहीं जीत पाओगे, क्योंकि इनके पास तर्क वितर्क अपने बहुत सारे हैं, उनकी लॉजिक का जो भंडार है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, उनके पास हर चीज का अपना अपना लॉजिक है। तो देयरफॉर यू शुड नॉट आर्ग्यू विथ नंबर 8 पीपल एवर। राइट, लास्ट नंबर की तरफ आते हैं, नंबर 9। आई एम a number 9 myself, so before I ask anyone, is there anyone who is number 9? I am number 9 myself and I can resonate to all of these features. What are these features for those who are born on 9, 18 or 27? Who are born on 9, 18 or 27? These people are fighter. These people are courageous. Sandeep More sir is on 27th. तो ये लोग जो है, इनका नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। इवन इफ दे हैव अ फेलियर इन देयर लाइफ, दे विल नॉट क्रिप, दे विल नॉट कंप्लेन, दे विल कम बैक स्ट्रांग, दे विल फाइट स्ट्रांग एंड दे विल कम बैक हार्डर इन लाइफ एंड दे विल बी मच मोर सक्सेसफुल गोइंग फॉरवर्ड। ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन। अभी स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि दिन रात मंदिर में जाके बैठो, स्पिरिचुअलिटी हैज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। राइट, you need not be visiting temple just to prove that you are spiritual. Spirituality comes from within, naturally आता है वो। Then these people are humanitarian. इनको जो है वो लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। खुद का पोजीशन कैसा भी होगा, अगर इनके पास कोई मदद के लिए मदद मांगने आ जाए, ये लोग आंख बंद करके उनकी मदद करेंगे, बिना सोचे समझे कि खुद की हालत क्या है। That is their biggest quality. Loyal, you can trust them blindly. These people are very much loyal. अनप्रेडिक्टेबल, ये उनका नेगेटिव ट्रेट है कि ये लोग कभी भी अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर सकते हैं, कभी भी गुस्सा आ सकता है, कभी भी मूड चेंज हो सकता है। राइट, दीज पीपल कैन बी नॉन रोमांटिक, दीज पीपल कैन बी नॉन रोमांटिक एट टाइम्स। अभी नंबर 9 वाले का जो है ना, रोमांस के मामले में एकदम आई वुड से इट इज 0 और 100, बीच में कुछ नहीं। जब रोमांटिक होंगे तब एकदम दुनिया के बाहर एकदम रोमांटिक हो जाएंगे। राइट, दे विल प्लान सरप्राइजेस फॉर यू, दे विल प्लान मेनी थिंग्स फॉर यू, बट जब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। देयर मे बी सम बर्थडेज वेयर दे विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, but there may be some birthdays where they will plan a great candlelight dinner, they will plan some surprises, lot of surprises, and it can be 0 or 100, बीच में कुछ नहीं करेंगे ये लोग। दूसरा इनका प्रॉब्लम हो सकता है कि नंबर 9 वाले जो है ब्लंट हो सकते हैं, आउटस्पोकन हो सकते हैं, कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं एक्साइटमेंट में, और वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्फ एस्टीम, इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए सेल्फ एस्टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑन अ लाइटर नोट, कुछ भी करने का नंबर 9 का ईगो हर्ट नहीं करने का। राइट, उनका सेल्फ एस्टीम उनके लिए सबसे ऊपर है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर 9 वाले लोग आपको ईगोइस्टिक लगे, आपको ऐसा लगे कि यार ये खड़ूस है बंदा, पर वो खड़ूस नहीं होता है। प्रैक्टिकली दैट इज देयर सेल्फ एस्टीम, दे हैव सम एथिक्स इन देयर लाइफ, दे हैव सम रूल्स इन देयर लाइफ, उनके बनाए हुए रूल्स, उनके बनाए हुए गाइडलाइंस, जिनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। राइट, that is why they have their self esteem and they don't go beyond their boundaries, or they don't go beyond their values. Right, so these are the characteristics of number 1 to number 9. Now quickly going on to the numbers present in your birth chart. सबसे पहले नंबर 1, अगर आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी आ रहा है तो इट इज नंबर फॉर कम्युनिकेशन। नंबर 2 इज नंबर फॉर सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। सो अगर एक नंबर आपके बर्थ चार्ट में आ रहा है, इट मींस यू आर गुड इन कम्युनिकेशन। नंबर 2 अगर आ रहा है, इट मींस यू आर सेंसिटिव एंड यू हैव गुड इंट्यूशन पावर, यू शुड यूज योर इंट्यूशन पावर। नंबर 3 अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी आ रहा है,
डेट में, मंथ में, ईयर में, कहीं पे भी आ रहे हैं ये नंबर्स, तब ये ट्रेड्स आपके इसमें आ जाएंगे। नंबर 3 है तो आप क्रिएटिव होगे, आप इमेजिनेटिव, आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होगा। नंबर 4 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आ रहा है तो आप ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रहोगे। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, राइट। नंबर 5 गिव्स यू स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। नंबर 6 makes you a family person, gives you relationship, gives you money, gives you prosperity. नंबर 7 gives you wisdom, as I said, पर साथ ही साथ क्या आता है? डिसअपॉइंटमेंट। नंबर 7 अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी मौजूद है, डिसअपॉइंटमेंट्स, चीटिंग, फ्रॉड हो सकता है, तो हो सके तो पार्टनरशिप अवॉइड कीजिए, शादी सोच समझ के कीजिए, राइट, रिलेशनशिप सोच समझ के कीजिए। नंबर 8 आपको बिजनेसमैन बनाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देता है। नंबर 9 जो है वो ह्यूमैनिटेरियन और इंटेलिजेंस का नंबर है, राइट। So this is where these numbers present in your birth chart will give you these characteristics. So जो नंबर आपके पास है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होंगे, राइट। उसके बाद मिसिंग नंबर्स, अगर कोई नंबर मिसिंग है, फॉर एग्जांपल अगर नंबर 1 मिसिंग है तो क्या होगा? आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है, अगर अभी आपके केस में तो नंबर 1 होगा ही, बिकॉज वी आर ऑल बॉर्न इन 20th सेंचुरी, मतलब 1900 से 1999 तक जो भी लोग जन्मे हैं उनके पास 1 नेचुरली आता होगा, तो ये लोग जो है उसको उनको टेंशन नहीं है। बट प्रॉब्लम में कम व्हेन समवन इज बॉर्न आफ्टर 2000, वहां पे 2 नंबर या वहां पे 1 नंबर बहुत बार मिसिंग हो सकता है। तो देयर what they should do, they should not choose profession involving communication. अगर नंबर 2 एब्सेंट है, ये लोग क्या करेंगे? अपना गलती कभी एडमिट नहीं करेंगे, they will never admit their mistake, they will try to justify them. They may surrender in tough situations, they may surrender in tough situations. Then comes lack of discipline. अगर 4 नंबर नहीं है तो आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा। 5 नंबर मास्टर की है, अगर मास्टर की एब्सेंट है तो अप्स एंड डाउन आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपकी लाइफ स्टेडी नहीं होगी। 6 अगर नहीं है तो फैमिली रिलेशनशिप सफर हो सकता है, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। 7 अगर मिसिंग है तो स्पिरिचुअलिज्म मिसिंग है, ठीक है। 8 नंबर मिसिंग है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लोग बोलते हैं ना कि पैसा है पर टिकता नहीं है, पैसा आता है सर पर टिकता नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, 8 नंबर नहीं होगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ए चैलेंज। ओके, सो आगे बढ़े। नंबर 9 अगर मिसिंग है तो यू मे बी डिटैच्ड एंड यू मे टेंड टू ओवरलुक फीलिंग्स ऑफ अदर्स। So this is an ideal chart. In the interest of the time, I will not go through this in detail because अगर इस पे मैं गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। We need to cover वास्तु also, right? ये एक आइडियल चार्ट होता है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मैंने मेरा एग्जांपल यहाँ पे आगे दिखाया हुआ है, 9 मई 1986। तो हर एक ब्लॉक में जहाँ पे भी सपोज 9 है, 9 कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट ब्लॉक सेंटर, तो 9 वहां पे आ जाएगा। मे बीच में, सेंटर में 5 नंबर, फिर 1986 का 1 कहाँ पे? लास्ट रो बीच में। 9 अगेन ऊपर दूसरी बार 9 आ गया। 8 नंबर के कॉलम में, और 6 जो है लास्ट रो राइट हैंड साइड थर्ड कॉलम 6 नंबर। सो इस तरह से हम अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं, राइट। 3 लॉटरी होती है आपके बर्थ चार्ट में। सबसे पहली लॉटरी होती है योर मूलांक और ड्राइवर। हाउ टू कैलकुलेट दैट? सम टोटल ऑफ योर ओनली डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9। यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 है, तो 9 इज माई मूलांक और ड्राइवर, ठीक है। आई एम रूल्ड बाय नंबर 9 इफ आई एम बोर्न ऑन 9, राइट। सिमिलरली अगर कोई 27 को रूल होता है, सो 2 + 7 ऑल्सो इज द ड्राइवर, तो 9 हो जाएगा। अगर कोई 11 तारीख को जन्मा है तो 1 + 1 2 बिकम्स देयर ड्राइवर, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर मूलांक और ड्राइवर। दूसरा लॉटरी है भाग्यांक और कंडक्टर। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। मेरा खुद का डेट ऑफ बर्थ है 951986, इसको मैं पूरा टोटल करूंगा तो आएगा कंपाउंड नंबर 11 पे। 11 को भी मैं सिंगल डिजिट में लेके आऊंगा, 1 + 1 = 2। दिस इज हाउ आई कैलकुलेट माय सेकंड लॉटरी, दैट इज माय भाग्यांक और कंडक्टर। लॉटरी क्यों है? क्योंकि ये जो नंबर है ये आपके डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली आते हैं, और वो भी आपके चार्ट में बाद में आ जाएंगे, राइट। तो देयरफॉर कुआ नंबर अगर मैं कैलकुलेट करूं, कुआ नंबर जो है, अगेन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैजिक नंबर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर लकी नंबर बोलो या व्हाटएवर ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। सो ये जो नंबर है कुआ नंबर जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? आपका ईयर ऑफ बर्थ। जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1 + 9 + 8 + 6, ये सबका टोटल करेंगे तो ये केस में देखो आएगा 6, 24 आएगा, 24 से 6 आएगा, ठीक है।
11 में से वो नंबर माइनस करना है, 11 में से वो नंबर माइनस करना है, 11 माइनस 6, तो मेल का कुआ आ गया 5, मेल का कुआ आ गया 5। फीमेल के लिए क्या करना है, मुझे 4 प्लस 6 करना है, ये जो भी 6 आया उसमें मुझे 4 ऐड करना है। मेल के लिए 11 में से माइनस करना है और फीमेल के लिए 4 ऐड करना है, तो 4 प्लस 6 10, 10 को अगर मैं अगेन सिंगल डिजिट पे लेके आऊं तो 1, तो 1 इज योर कुआ नंबर इफ यू आर अ फीमेल, राइट। अभी आप पूछोगे 11 में से ही क्यों माइनस करने का और 4 ही क्यों ऐड करने का, सो दैट इज अ फॉर्मूला विच इज बीन गिवन बाय द फाउंडर ऑफ दिस लोशू ग्रिड न्यूमरोलॉजी, राइट। सो उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है वही फॉर्मूला को हम फॉलो करते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक लॉजिक टू दिस, इट इज हिज कैलकुलेशन एंड लिटरली दे वर्क very much well. If you go to my YouTube channel, I have a specific video on Kua number which is trending on YouTube currently, right? And almost 40,000 50,000 views हो चुके हैं इस particular video पे, which is only on Kua number. So this is how I make my entire birth chart after including lottery 1, lottery 2 and lottery 3, right? So I think ये जो है अगर आपके पास 4, 3, 8 ये तीनों नंबर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है तो आपका थॉट प्लेन बहुत अच्छा होगा, आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होगा, वेरी थॉटफुल, स्ट्रांग माइंड पावर। 951 इसको मैं बोलता हूँ विल पावर। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे, मेजोरिटी लोगों के पास ये तीनों नंबर होंगे 951, राइट। विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का। दे आर नॉन कंप्लेनिंग, सिंबल ऑफ सक्सेस, डिफिकल्ट टू रीड। मुकेश अंबानी 951 कंप्लीट, रतन टाटा अगेन 951 कंप्लीट। सो बहुत सारे जो भी आप देखोगे सक्सेसफुल लोग, 70 to 80% people will have 951 complete in their birth chart. 276 is an action plane। लास्ट 3 कॉलम जो हमने देखा, लास्ट 3 रोज रेदर कॉलम हमने जो देखा, लास्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, 276 अगर ये तीनों नंबर आपके इसमें मौजूद है तो आप एक्शन टेकर हो। आप लाइफ में सिर्फ प्लान नहीं बनाते, आप उन प्लान पे एक्शन भी लेते हो। यू आर एक्शन ओरिएंटेड, नॉट जस्ट प्लानर्स बट डूअर्स ऑल्सो। 492 इज अ मेंटल प्लेन। ये लोग जो है ब्रेन पावर इनका बहुत अच्छा होता है, इनका स्ट्रॉन्ग मेमोरी होता है। 357 हार्ट ओवर माइंड। ये लोग जो है पहले दूसरों का सोचेंगे फिर खुद का सोचेंगे, ठीक है। ये लोग खुद का पैसा भी नहीं मांग सकेंगे, अगर हक का पैसा है वो भी नहीं मांग सकेंगे लोगों से। हार्ट ओवर ब्रेन, दे ऑलवेज ट्रस्ट अदर्स, दे आर इमोशनल पीपल एंड दे कैन बी ट्रस्टेड ऑल्सो। इन पे आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा है आसपास में जिसका 357 कंप्लीट हो रहा है, उसको आप कभी छोड़ना नहीं, उसको अपने लाइफ में पकड़ के रखो। ये लोग आपके बहुत काम के हैं, ये लोग आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, ये लोग आपको सच में हेल्प कर सकते हैं लाइफ में। 816 इज अ प्रैक्टिकल प्लेन। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। एट टाइम्स दे में लैक इमोशंस बट दे बिलीव इन डिटेल्ड एनालिसिस। कभी कभी ये लोग जो है बाल की खाल निकाल के डिसीजन लेते हैं एंड देयरफॉर एट टाइम्स दे में डिले इन टेकिंग डिसीजन। एंड डिसीजन कैन बी एज सिंपल एज जोमेटो से क्या ऑर्डर करना है, राइट। ऑर्डर करते करते भी वो लोग 10 बार सुनेंगे, ये मंगाओ या कुछ और मंगाओ, ये मंगाओ या कुछ और मंगाओ, राइट। ऐसा भी हो सकता है 816 वालों के साथ। बाल की खाल। राजयोग, 2 राजयोग होते हैं 456। ये राजयोग है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 456 मौजूद है, इट मींस आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। यू कैन नॉट ओनली बी सक्सेसफुल बट अल्ट्रा सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज 258। दिस इज कॉल्ड एज सिल्वर राजयोग और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। अगर आपके बर्थ चार्ट में 258 आ रहा है तो आपके पास प्रॉपर्टी होगा, आपके पास रियल एस्टेट का योग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आएगा, पेरेंट्स का प्रॉपर्टी आएगा, या तो आप खुद भी बनाओगे उस प्रॉपर्टी को। प्रोफेशन, आई थिंक आई क्विकली रन थ्रू दिस। नंबर 1 वाले जो लोग हैं 1, 10, 19, 28, उनको जनरली बिजनेस करना चाहिए। दे कैन डू एनी प्रोफेशन बिकॉज दे आर रूल्ड बाय सन, और सन क्या है, ग्रहों का राजा। फायर रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री एक्सेट्रा। लग्जूरियस बिजनेस, कैसीनो, मीडिया, बार, ये सब वो आप कर सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बर्थ चार्ट, बट ये जस्ट एक जनरल गाइडलाइन है कि अगर आप इस दिन पे पैदा हुए तो ये प्रोफेशन, ये बिजनेस आपके लिए ठीक हो सकते हैं। नंबर 2 वाले को क्योंकि मूडी है, मूड स्विंग्स होता है, जनरली शांति से बैठ के जॉब करना चाहिए, ज्यादा हार्डमारी मत करो। दूसरा, अगर बिजनेस करना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो आप, नेवी में जा सकते हो। नंबर 3 वाले लोग, यू कैन डू जॉब और बिजनेस एनीथिंग बिकॉज यू आर क्रिएटिव, यू आर गुड इन एजुकेशन, जुपिटर है, गुरु है, आप एजुकेशन फील्ड में अच्छा कर सकते हो, ऑकल्ट फील्ड में अच्छा कर सकते हो, हीलिंग में अच्छा कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर क्योंकि क्रिएटिविटी आती है, मीडिया, बिहाइंड द कैमरा, क्रिएटिव पर्सन, कंसल्टिंग, वेलनेस सेंटर,
यू कैन हैव योर ओन वेलनेस सेंटर, स्पा एक्सेट्रा। 4 नंबर ने बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी के अंडर ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। दे नीड कंट्रोल, दे नीड चार्ज। बिजनेस, शेफ, इंजीनियरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, लॉ, फिजिकल स्पोर्ट्स और अदर मेंटल स्पोर्ट्स ज्यादा करेंगे ये लोग, कर सकते हैं। एक्चुअल साइंस, इंश्योरेंस फील्ड में एक्सेट्रा ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं एक्चुअल फील्ड में। नंबर 5, इनको आइडियली जॉब करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी 5 नंबर वाले आलसी होते हैं। इसीलिए बिजनेस में अगर आप आलस करोगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। यू हैव टू बी एक्टिव ऑल द टाइम, राइट। वी ऑलवेज से बिजनेसमैन आर नेवर ऑन लीव। सैटरडे संडे भी वो लोग काम करते हैं, क्योंकि खुद का बिजनेस है, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 5 नंबर वालों को जनरली जॉब करना चाहिए। एंड दे कैन डू एनीथिंग। 5 नंबर मास्टर नंबर है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप आलस को छोड़ दोगे तो आप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हो। एनी प्रोफेशन, रियल एस्टेट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटिंग जॉब विल बी बेस्ट फॉर यू। नंबर 6, शुक्र। शुक्र मीन्स नेम, फेम, पैसा, दौलत, शोहरत, बॉलीवुड, राइट, बॉलीवुड, बराबर है। तो इसके लिए जो है आपके लिए क्या है, मीडिया, होटल, रेस्टोरेंट, गारमेंट्स, कपड़ों का बिजनेस, फैशन, एनी लग्जूरियस बिजनेस, कोई भी लग्जूरियस बिजनेस, टूर्स, ट्रैवल्स, एयर होस्टेस बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, बार खोल सकते हो, ज्वेलरी का शॉप खोल सकते हो, राइट। तो ये सब चीज जो है आप अच्छी तरह से कर सकते हो। नंबर 7 वाले लोग जॉब करना चाहिए, क्योंकि चीटिंग होने का चांसेस है, बिजनेस में फ्रॉड होने का चांसेस है। इसलिए ज्यादा करके आपको ये करना चाहिए। बिजनेस कर रहे हो तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जॉब, रिसर्च, हीलिंग, ऑकल्ट, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, बराबर है। बिजनेस नंबर 8 वालों, नॉर्मली आप बिजनेस ही करोगे, क्योंकि आप भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। लॉ का बिजनेस, लॉ का प्रोफेशन आप कर सकते हो। यू कैन बी अ गुड जज, जुडिशरी। फुटवेयर का बिजनेस, चप्पल का बिजनेस, शूज का बिजनेस, पेट्रोल, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, आयरन, मेटल, मेटल का भी बिजनेस आप कर सकते हो। पेट्रोल पंप खोल सकते हो, फाइनेंस में अच्छा कर सकते हो, फिजिकल स्पोर्ट्स में आप अच्छा कर सकते हो। नंबर 9 बिजनेस, आर्मी, एनजीओ, ये लोगों ने भी बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग प्लेनेट है, फियरसी प्लेनेट है। एजुकेशन, कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग। एजुकेशन कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग, राइट। हीलिंग में अच्छा कर सकते हैं, ओके। नेम स्पेलिंग, नाउ एज आई सेड, नेम स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It plays a very much vital role in your life. Only variable that you can change. You can only change your name spelling. You cannot do anything about your date of birth. It can be a game changer. मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए. 40-50% इम्पैक्ट होता है आपके लाइफ पे. It can be a make or break actually. Need to be compatible with your driver or conductor and should never come on 4 or 8. There is a formula. Each number, each alphabet has one word, one number denoted to it. It is not कि A से लेके Z 1 to 24 या 1 to 26, नहीं, ऐसा नहीं है. There are different numbers which are being aligned to each numbers, right? नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है आपके इसमें कि बॉस मेरे पास ये नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? व्हाट कैन आई डू? सो यू कैन डू सिंपल रेमेडीज ऑफ दोज मिसिंग नंबर्स टू improve your results in your life. सिंपल रेमेडीज मैं आपको क्विकली बता देता हूँ. नंबर 1 से लेके नंबर 9 अगर मिसिंग है तो क्या क्या रेमेडीज आपको करना चाहिए, ठीक है? अगेन दिस इज जस्ट अ गाइडेंस गिवन द शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम. आई कैन ओनली गिव यू एन ओवरव्यू, आई कैन नॉट गो डीप. तो अगर नंबर 1 मिसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सूर्य को जल देना चाहिए, क्योंकि क्या है, सन इज द रूलिंग प्लैनेट. सो देयरफॉर यू शुड गिव वाटर टू सन. यू कैन वेयर रेड कलर थ्रेड, राइट? ये देखो मेरे पास नंबर 1 है, फिर भी मैंने थ्रेड पहना हुआ है, रेड थ्रेड आप पहन सकते हो, राइट? दूसरा, 2 नंबर अगर मिसिंग है तो आपको चांदी के ग्लास में पानी पीना है. शिव जी को आप जल दे सकते हो. ये दोनों में से कोई भी एक रेमेडी आप कर सकते हो. चांदी का कड़ा पहन सकते हो. नंबर 3 अगर मिसिंग है, तो आप केसर तिलक कर सकते हो. केसर अष्टगंध का तिलक आता है, वो आप तिलक रेगुलरली कर सकते हो. या तो केले के पेड़ पे हल्दी वाला पानी आप चढ़ा सकते हो. नंबर 4 और नंबर 7 राहु केतु है. अगर ये मिसिंग है, आपको सिंपल चीज करना है, कुत्ते या कौवे को खाना खिलाना है. कुत्ते या कौवे को दूध में भिगी हुई रोटी या ब्रेड खिलाना है. वेरी सिंपल, ठीक है? ये हो गया 4 और 7 का रेमेडी. नंबर 5 अगर मिसिंग है तो सिंपल रेमेडी है,
हरी चीजों का सेवन आपको ज्यादा करना है। ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कीप ग्रीन थिंग विथ यू, ग्रीन पेन रखो जेब में, ग्रीन हैंकरचीफ रखो, ग्रीन रिस्ट बैंड रखो, ये चीजें आप करो तो बहुत आपका फायदा होगा। दूसरा, आप वेनेसडे के दिन जो है गणेश जी के टेम्पल में जाके, मास्टर रेमेडी है ये मेरा, वेनेसडे के दिन आप गणेश जी के टेम्पल में जाके 5 पीला लड्डू या 5 पीला मोदक चढ़ा सकते हो। इट विल बी वेरी गुड एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। नंबर 6 का मिसिंग रेमेडी है, फ्राइडे के दिन आपको जो है सफेद चीजों का दान करना है, गरीबों को सफेद चीजों का दान करना है। दूसरा, 7 नंबर का रेमेडी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 8 नंबर का रेमेडी, आपको शनि को तेल चढ़ाना है शनिवार के दिन। या तो शनिवार के दिन बुजुर्ग बेगर्स को या बुजुर्ग जरूरतमंद लोगों को आपको सिक्कों का दान करना है, कॉइन्स डोनेट करने हैं। 9 नंबर का रेमेडी सिंपल है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब ये सारे रेमेडीज जो है वो हाईली इफेक्टिव, हाईली सिंपल रेमेडीज है, पर इसमें आप देखो आपका खर्चा कितना हुआ। Is there any cost involved in all these remedies? Very less cost, right? Very less cost. जेब से बिल्कुल पैसा नहीं गया, बिल्कुल आपका टाइम नहीं गया. So highly effective, highly productive and even cost effective remedies. यही रेमेडीज मैं मेरे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ. अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो, एंटी नंबर्स, अपोजिट नंबर, ये वो पूरा बढ़ चढ़ देख के हम सजेशन देते हैं, बट दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन विच आई गेव यू, राइट? सो यही रेमेडीज आपको करना है. ना आपको कुछ महंगी चीजें पहननी है, ना आपको डायमंड पहनना है, ना आपको पुखराज पहनना है, ना आपको कुछ पहनना है मूंगा पहनना है. कुछ इतना महंगा आपको ज्वेलरी या डायमंड या कुछ भी पहनने का जरूरत नहीं है. नो जेम स्टोन्स. आई नेवर एवर सजेस्ट अ सिंगल जेम स्टोन टू एनी ऑफ माई क्लाइंट. Yes, I have a deep study in Rudraksh. I am an author of a book in Rudraksh also. So I recommend Rudraksh remedies over any gemstones, right? Because Indian culture, Indian Ved, Indian Puran has reference to mantra, tantra and yantra. We believe in mantra, tantra and yantra, but we don't believe in gemstones. India में as such gemstone का, this is purely a business, I would say, if I can be that blunt and outspoken or straightforward, being a number 9. This is purely a business of astrologers or द ज्वेलर्स. ठीक है, इससे आपका कितना भला होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि जेमस्टोन्स में जो खर्चा होता है दैट इज इन लैक्स, एट टाइम्स इट इज इन लैक्स, राइट? सो ज्योतिष के पास हम कब जाते हैं, हम कंसल्टेंट के पास कब जाते हैं? जब हम तकलीफ में हैं. तो जब मैं तकलीफ में हूँ, अगर मैं किसी के पास जाता हूँ और वो इंसान मुझे बोलते हैं आप 1 लाख खर्चा करो, 2 लाख खर्चा करो, इज इट राइट ऑन माई पार्ट? द आंसर इज नो. माई कॉन्शियस डज नॉट अलाउ मी टू हैव दैट मच ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन माई क्लाइंट, इवन इफ इज वेल टू डू. even if he can afford, I will never ever suggest कि हाँ भाई करोड़पति है तो इसको बोल दो हीरा पहन लो, इसको बोल दो पुखराज पहन लो. नहीं, आई नेवर एवर डू दैट, नेवर एवर. बी इट एन एनआरआई क्लाइंट, बी इट एन इंडियन क्लाइंट. अगर वो सामने से पूछे तो मैं बोलता हूँ इफ यू वांट टू वेयर इट एज ए ज्वेलरी, नॉट एज ए रेमेडी. दैट इज नॉट रेमेडी इन माई syllabus, that is not a remedy in my own books, I would always say. ठीक है? So I think that answers the question on if we have missing numbers, how do we do it. ठीक है, अभी हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ क्विकली. वास्तु. वास्तु क्या है? एज द नेम सजेस्ट, वास प्लस टू, वास प्लस टू, राइट? वास प्लस टू इज इक्वल टू वास्तु. वास्तु क्या है? इट इज नथिंग बट साइंस ऑफ क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द 5 एलिमेंट्स. व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स? वाटर, अर्थ, फायर, स्काई, स्पेस, राइट? पानी, वायु, जल. पानी और जल एक ही हो गया. जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, राइट? दीज आर द 5 एलिमेंट्स. एनवायरमेंट क्या है? वाटर, माउंटेन, ट्रीज, एयर एक्सेट्रा. और 8 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शन हो गए. फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये 4 सब डायरेक्शंस हो गए, राइट? 8 मेजर डायरेक्शंस है. वैसे देखने जाओ तो 16 डायरेक्शंस भी है, 32 डायरेक्शन भी है, लोग बोलते हैं 32 डायरेक्शंस, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने पास ये 8 ही डायरेक्शंस है. ठीक है? सो क्विकली, एलिमेंट्स एंड देयर डायरेक्शंस. नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है आपका, वो एयर है, एयर एलिमेंट है, वायुदेव है. नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो कुबेर है, वाटर है. ईशान कोना है, इसको हम बोलते हैं देव. वहां पे भगवान नॉर्मली हम रखते हैं, शिव इज द डीटी. वरुण देव वेस्ट के भगवान है, वाटर एलिमेंट है अगेन. ब्रह्मदेव स्काई है, और अगेन नॉर्थ वेस्ट में इंद्र है, अगेन वाटर. नॉर्थ ईस्ट में रादर इंद्र है, वाटर.
सो यहाँ पे व्हाट डू आई मीन बाय दिस एलिमेंट, नॉर्थ वेस्ट में हवा होनी चाहिए, नॉर्थ में पानी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भगवान होने चाहिए, और वेस्ट में जो है वरुण देव दैट इज पानी होना चाहिए, ब्रह्म जो है वो खाली होना चाहिए, ओपन टू स्काई, ब्रह्मस्थल पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इंद्र नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज ईस्ट यहाँ पे पानी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज ईस्ट वाटर एलिमेंट आपको वहां पे पानी होना चाहिए, साउथ ईस्ट इज अ फायर एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे फायर होना चाहिए, साउथ और साउथ वेस्ट ये दोनों अर्थ एलिमेंट है, यम देव और नैऋत्य देव, यहाँ पे आप वेट दे सकते हो, यहाँ पे आप अर्थ एलिमेंट है। सो इफेक्टिवली क्या है वास्तु, वास्तु इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दीज 8 डायरेक्शंस, हर एक डायरेक्शन का जो जगह है, पानी जहाँ है वहां पे पानी रख दो, अग्निकोण जहाँ है यहाँ पे किचन होना चाहिए, साउथ ईस्ट, राइट, वहां पे आपका फायर एलिमेंट होना चाहिए, वहां पे दिया लगना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपने ये बेसिक चीजें कर ली कि वाटर एलिमेंट को वाटर के जगह पे रख दिया, फायर एलिमेंट को फायर के जगह पे रख दिया, तो आपका वास्तु आप खुद ही ठीक कर सकते हो, आपको किसी कंसल्टेंट का जरूरत नहीं, राइट। ये 9 प्लैनेट्स है, अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू डीप बिकॉज थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा ये। बॉडी पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके घर के या आपके ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट है तो फीमेल के हेल्थ को इंपैक्ट हो सकता है, यंग फीमेल आपके घर की, उनका लेफ्ट हैंड में इफेक्ट हो सकता है। अगर नॉर्थ में कोई डिफेक्ट है तो मेल को इश्यू हो सकता है, शोल्डर, मेल के शोल्डर को इश्यू हो सकता है या डिफेक्ट प्रॉब्लम हो सकता है। मेल के हेड को, नॉर्थ ईस्ट में अगर डिफेक्ट है तो मेल के सर को, हेड को प्रॉब्लम हो सकता है, हेड इंजरी हो सकता है या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। वेस्ट फीमेल, खास करके यंग फीमेल, उनके बैक स्पाइन इंजरी हो सकता है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। और सेंटर, सेंटर में अगर गड़बड़ है, सेंटर में वजन आ गया है, कुछ आ गया, तो मेल के पेट में, मेल के स्टमक में प्रॉब्लम हो सकता है, मेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यू हो सकता है। ईस्ट में अगर कोई डिफेक्ट है तो मेल के चेस्ट में हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, छाती में पेन हो सकता है, रिब केज में इश्यू हो सकता है। साउथ ईस्ट में अगर कुछ इश्यू है तो फीमेल, एल्डरली और मिडिल एज सन, ये दोनों को राइट हैंड में प्रॉब्लम हो सकता है, ये दोनों को राइट हैंड में प्रॉब्लम हो सकता है। साउथ में अगर कोई इश्यू है तो मेल, खास करके हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, उनके हिप्स में प्रॉब्लम आ सकता है, बिलो द कमर, कमर के नीचे हिप्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। और साउथ वेस्ट में अगर कोई डिफेक्ट है तो वहां पे जो है वो हेड को, अगेन हेड ऑफ द फैमिली को पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, लेग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, बोन इंजरी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है पैर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। की एट्रीब्यूट्स, जो 8 डायरेक्शन है वो आपको क्या देते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन आपको पैसा देता है, करियर देता है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो जुपिटर गुरु है, वो आपको ऑलराउंड प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप विद इन द फैमिली, प्रोजेनी, वंश with the एजुकेशन, राइट। सो बहुत बार मैं देखता हूँ कि किसी के घर में जो है बच्चा बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम होता है, एक्सेट्रा, वंश वृद्धि नहीं होती, तो वहां पे मैं आपको इमीडिएटली बोल सकता हूँ कि उनके नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होगा, बिना घर देखे, बिना ऑफिस देखे मैं बोल सकता हूँ उनके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा। अगर घर में बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है, घर में कोई कैंसर पेशेंट है, तो मैं बिना देखे बोल सकता हूँ उस घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, राइट। बिना उस घर को विजिट किए, बिना उस घर के मैप को देखे मैं बोल सकता हूँ किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ईस्ट, ईस्ट आपको क्या देता है? नॉलेज, इंटेलेक्ट, हेल्थ, रिलेशनशिप विद इन द फैमिली, नेम एंड फेम, सोशल स्टेटस। साउथ ईस्ट आपको क्या देता है? वीनस, शुक्र। साउथ ईस्ट आपको क्या देता है? नॉलेज, इंटेलेक्ट, अगेन हेल्थ, नेम फेम, सोशल स्टेटस। साउथ क्या देता है आपको? स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। साउथ आपको क्या देता है? स्ट्रेंथ। साउथ और साउथ वेस्ट दोनों आपको सेम चीज देता है, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप। वेस्ट, शनि आपको क्या देता है? स्पिरिचुअलिज्म, रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, रिलीजियस बनाता है आपको, मनी। वेस्ट आपको पैसा भी देता है, राइट, क्योंकि वेस्ट में जो है वो वरुण, वरुण देव है, और वरुण देव जो है वो लक्ष्मी जी जो है वो वरुण पुत्री है, वरुण जी की माता है। और आप देखोगे लक्ष्मी जी इज वाइफ ऑफ विष्णु जी, तो वो कहाँ पे रहते हैं? पानी में नीचे, राइट, समुद्र में नीचे रहते हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी भी वेस्ट से आती है बहुत ज्यादा बार। नॉर्थ वेस्ट आपको देता है अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का। अगर नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट है तो आपके घर में चोरी भी हो सकती है और कोर्ट केसेस भी आप पे हो सकते हैं। सेंटर, मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्शन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट।
तो अगर ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है तो सेंटर हमेशा आपका खाली रहना चाहिए। 3 डायरेक्शन जहां पे बिल्कुल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए इज योर नॉर्थ ईस्ट, सेंटर एंड साउथ वेस्ट। ये तीनों डायरेक्शन बहुत ही की और इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ये तीनों डायरेक्शन में बिल्कुल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज आपने टेक केयर कर ली तो डेफिनेटली आपका मेजोरिटी वास्तु दोष जो है वो निकल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो, इट इज डिफिकल्ट टू हैव 100% वास्तु कंप्लायंट हाउस। अगर कोई बिल्डर क्लेम कर रहा है या अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट भी क्लेम कर रहा है कि दिस हाउस इज 100% वास्तु कंप्लायंट, तो 100% वो झूठ बोल रहा है। What you need to check, you just need to check is वास्तु जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन आपके क्लियर होने चाहिए। हवा, सी वास्तु क्या है, इट इज नथिंग बट एयर एंड लाइट। नेचुरल एयर एंड लाइट कहां से आ रही है, प्योर डायरेक्शन से आनी चाहिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ये 3 जगह से आपको खिड़की, बालकनी या जो भी है नेचुरल एयर यहां से आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको मेन वास्तु में देखनी है। नाउ लेट अस लुक एट फ्यू मिथ्स इन द वास्तु। सबसे पहला क्या है कि साउथ डायरेक्शन बुरा होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर मेरा साउथ डोर है, साउथ एंट्री है तो बहुत प्रॉब्लम होता है ये वो। मेरे हिसाब से आप देखो, दिल्ली में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग साउथ दिल्ली में है। मुंबई देख लो, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग साउथ मुंबई में है। ऑस्ट्रेलिया देख लो, जो भी कंट्री सक्सेसफुल है वो साउथ में है, राइट। सो देयरफॉर साउथ डायरेक्शन इज बैड, दिस इज द बिगेस्ट मिथ इन वास्तु। दूसरा मिथ है 3 डोर्स इन 1 रो, 3 डोर अगर एक रो में आते तो वो हानिकारक है, वो भी एक गलत मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दस वास्तु अफेक्ट रेंटल हाउस। आप बोलोगे भाई ये घर तो मेरा है ही नहीं, मैं तो भाड़े पे रहता हूँ, तो कैसे मुझे वास्तु इम्पैक्ट करेगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट इनिशियली बोला, वास्तु इज इक्वल टू वास इज इक्वल टू तू। तो आप जहां पे रहते हो उसका वास्तु आपको इफेक्ट करेगा, चाहे वो आपका खुद का घर हो या चाहे वो रेंटल हाउस हो। उस घर में जो रह रहा है, चाहे वो ओनर हो या टेनेंट हो, उसको वास्तु इफेक्ट करेगा, ना कि जो उस घर में नहीं रह रहा है। ठीक है। एक दूसरा मिथ होता है कि जब से मैंने एक प्लॉट लिया है तब से मेरी लाइफ में पनौती लग गई है, तब से मेरा बैड लक चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वास्तु की वजह से ऐसा नहीं होता है। और कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज यू हैव बॉट अ प्लॉट उसके बाद आपका डाउनफॉल चालू हो गया, या जस्ट बिकॉज यू हैव बॉट अ प्रॉपर्टी उसके बाद आपका डाउनफॉल चालू हो गया, उसमें वास्तु का कोई दोष नहीं। क्योंकि जब तक आप वहां रहने नहीं जाते, जब तक आप वहां पे अपना ऑफिस चालू नहीं करते या रहने नहीं जाते, उधर का वास्तु आपको इंपैक्ट नहीं करेगा, उधर का वास्तु आपको इंपैक्ट नहीं करेगा, राइट। इंडस्ट्रियल, अभी आते हैं फैक्ट्रीज में, अभी आते हैं फैक्ट्रीज में, द वास्तु रिलेटेड टू फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट होता है, मशीनरी हम कहाँ पे रखें, रॉ मटेरियल हम कहाँ पे रखें, फिनिश गुड्स हम कहाँ पे रखें, बॉस का ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, अगर मैं ओनर हूं तो ओनर का ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, चिमनी बॉयलर कहाँ पे होना चाहिए, ये मेन एलिमेंट्स है मेरे फैक्ट्री के। सो विल क्विकली सी कौन सा चीज कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मशीनरी आते हैं, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का की पार्ट है। मशीनरी कहाँ पे होना चाहिए, अभी मशीनरी जो है वो हैवी है, हैवी होता है मशीनरी, राइट, उसमें वेट होता है। इसलिए आई वुड प्रेफर जो वेट एलिमेंट है वो साउथ, साउथ वेस्ट, दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन टू हैव योर मशीनरी, साउथ और साउथ वेस्ट। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो साउथ ईस्ट में रखिए, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वेस्ट में रखिए। नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा वजन नहीं आना चाहिए, छोटा मोटा मशीनरी, मीडियम मशीनरी नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और सेंटर, ये 4 डायरेक्शन में कभी भी, नॉर्थ आपको अवॉइड करना है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और सेंटर, यहाँ पे कभी भी मशीनरी नहीं होना चाहिए, नेवर एवर, इट कैन बी फेटल। आपका बिजनेस कितना भी अच्छा चलता रहो, अचानक से बंद पड़ जाएगा अगर आपके नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और सेंटर में मशीनरी आ रहा है तो, राइट। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल हो गया, और सॉरी मशीनरी हो गया। अभी हम आते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ होना चाहिए, रॉ मटेरियल जो है अगेन सेम चीज, क्योंकि मशीनरी वहां पे है, लॉजिक देखिए, मशीनरी वहां पे है, राइट। साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट मैंने रेकमेंड किया मशीनरी के लिए, और वेस्ट मैंने रेकमेंड किया। तो जहां पे मशीनरी है उसी के पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो ही बेटर है, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ पे, साउथ वेस्ट और साउथ, गुड, वेस्ट और साउथ ईस्ट, क्योंकि उसके पास आसपास है। ईस्ट में अवॉइड कीजिए, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में बिल्कुल कचरा, बिल्कुल वजन, बिल्कुल कोई चीज नहीं होना चाहिए, वो चीज खाली होना चाहिए नॉर्मली।
नॉर्थ अवॉइड कीजिए, नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो क्वेश्चन मार्क, राइट। सो रॉ मटेरियल का ये डायरेक्शन है। फिनिश गुड्स कहाँ पे रखना चाहिए? सबसे बेस्ट फिनिश गुड्स आपको रखना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, तो वो आपका जो सेल्स है बहुत फटाफट होगा, बहुत फास्ट होगा। फिनिश गुड्स जब भी आपका बन गया उसको आप नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। तो एक थंब रूल है वास्तु में कि जो भी चीज आपको बेचनी हो, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपके फिनिश गुड्स हो या जो भी हो, वो चीज आपको नॉर्थ वेस्ट में रखनी है। अगर आपको प्रॉपर्टी भी बेचनी है तो उसके पेपर्स जो है वो आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो, राइट। तो वो प्रॉपर्टी जल्दी से बिक जाएगी। अगर अटका हुआ है कहीं आपका प्रॉपर्टी सेल एक्सेट्रा, तो आप ये चीज करके देखिए कि नॉर्थ वेस्ट में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दीजिए, चाहे जेरोक्स ही क्यों ना हो सकता है कि ओरिजिनल बैंक के पास हो बिकॉज आपने लोन एक्सेट्रा लिया होगा, जेरोक्स ही क्यों ना हो, आप उसको नॉर्थ वेस्ट में रख के देखिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ और वेस्ट। सेकेंड बेस्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ और वेस्ट। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट आपको अवॉइड करना है। साउथ वेस्ट और साउथ 100% अवॉइड करना है। साउथ वेस्ट और साउथ में अगर आपने फिनिश गुड्स रखा तो वो माल कभी बिकेगा ही नहीं, वो माल कभी बिकेगा नहीं, वो आपके फैक्ट्री में सड़ता रहेगा। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, सेम थिंग इज विद सेंटर। ये तीन जगह पे कभी भी आपके फिनिश गुड्स नहीं होने चाहिए, ओके। फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स, ओनर्स ऑफिस, ओके। ओनर का ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए? ओनर का ऑफिस होना चाहिए साउथ वेस्ट में, साउथ में ओनर का ऑफिस होना चाहिए साउथ वेस्ट में, साउथ में या तो वेस्ट में। साउथ वेस्ट मतलब आई विल बी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ मतलब आई विल बी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इसीलिए उस डायरेक्शन में बोलता हूं मैं, राइट। वेस्ट मतलब वेरी गुड, आई विल बी फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ओके ओके है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेंटर में मेरा ऑफिस नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मेरा ऑफिस बीच में रखूंगा सो दैट आई कैन हैव अ लुक ऑफ द एंटायर ऑफिस, वो गलती से भी नहीं होना चाहिए। वहां पे आपको कैरेक्टर असैसिनेशन होगा अगर आपका ऑफिस सेंटर में है। कैरेक्टर असैसिनेशन मतलब आप पे कुछ भी गलत चार्जेस भी लग सकते हैं। आप पे फीमेल एम्प्लॉय, अगर आप मेल हो तो फीमेल एम्प्लॉय आप पे फिजिकल असॉल्ट या फिजिकल मैं कहूंगा कि इसका चार्जेस लगा सकते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, मतलब इफेक्टिवली सेक्सुअल हरेसमेंट का केस आप पे हो सकता है। लेट मी बी दैट ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसीलिए बेस्ट डायरेक्शंस आर साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट। वहां पे आपका ऑफिस होना चाहिए और यू शुड बी फेसिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वेस्ट है तो ईस्ट में फेस करो, साउथ वेस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में फेस करेंगे, साउथ है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्नेस फैक्ट्री में जो है मेन फर्नेस आग का जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? क्योंकि मैंने बोला फायर एलिमेंट इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो इज अ गुड डायरेक्शन फॉर फर्नेस। बाकी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉयलर और चिमनी कहाँ पे होना चाहिए? ये साउथ, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। वेस्ट में भी हो सकता है, बाकी कहीं भी नहीं होना चाहिए। ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सेट्रा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये सारा जो है वाटर एलिमेंट कहाँ पे है मेरा? वेस्ट में है, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में है। ये सारा मेरा वाटर एलिमेंट का जगह है, तो वहां पे ये होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट। अंडरग्राउंड सीवेज प्लांट्स एक्सेट्रा ये सब जो होता है, ये पानी के लिए जो है वाटर स्टोरेज एक्सेट्रा, ये सारा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ या वेस्ट में हो सकता है, क्योंकि ये सारे मेरे वाटर जोन से, ये सारे मेरे वाटर एलिमेंट्स हैं। Okay, I think that's all from my side. In the interest of the time, sorry, I had to rush because मुझे सभी चीजें कवर करनी थी. I did not want to skip anything, right? So, any questions? Happy to answer. Sir, one question that is there is one thing like aura scanner. Yeah. So what is aura scanner? The scanners for you which is used for vastu vibration. So what do you think? What's the purpose of that? See, aura scanner is something where you check the aura of that particular place. Now Yeah. there are the equipment should be good because बहुत बार ऐसा होता है कि aura scanner हर जगह पे आप कहीं पे भी लेके जाओ सेम रिजल्ट देता है, राइट। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑरा स्कैनर, बहुत सारे फेक ऑरा स्कैनर्स भी आते हैं, राइट, विच विल गिव यू सेम रिजल्ट। आप कुछ भी लेके जाओ वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। आई डोंट पर्सनली यूज ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर के लिए मैं आई लार्जली बिलीव ऑन माई ओन इंट्यूशन। आई डोंट बिलीव ऑन एनी इक्विपमेंट एज फार एज ऑरा ऑफ दैट पर्टिकुलर। सी ऑरा स्कैनर क्या है? उस एरिया के या उस प्रॉपर्टी के एनर्जी को स्कैन करता है। नाउ आई बिलीव ऑन मोर ह्यूमन इंटेलेक्ट रेदर देन एन इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी मशीन।
to check the aura scanner. I don't use aura scanner. I use my own intuition. Sir, कुछ what about सेकंड के लिए the आंख बंद करके आप खड़े हो जाओ उस जगह पे, उसका एनर्जी आपको नेचुरली फील हो जाएगा. आपको वास्तु कंसल्टेंट भी होने का जरूरत नहीं है, आपको नेचुरल एक फील आता है, राइट. जब आप घर भी लेने जाते हो तब भी आप उस जगह पे जस्ट एक 5 मिनट 5 सेकंड 15 सेकंड आंख बंद करके खड़े रहो, आपको वाइब आ जाएगा उस जगह का वाइब कैसा है. यस मैडम. Sir, what about the alphabet you had started? So how to decide which alphabet will add to our names will be benefiting us? So I'll tell you, there is one chart, I'll just show you, that is called as Chaldean chart, right? Each alphabet has its own numbers. Just let me flash that for you. Yeah, you can also Google it out, Chaldean numerology chart, right? I'm just flashing it on the screen, just a second. And so then addition of what should come so that gives the best result. Yeah, so see Addition. this is the chart where we use how do we calculate the name spelling, right? Each alphabet, is my screen visible? Yes, sir. Right, yeah, so these are the So my numbers. name is Peachy, so I'll start with you now. You, that is 6 and 4, Hmm. 10, and then I is 1, Yeah. 6, and 11, Hmm. 14. So this is how we calculate name spelling. So 20 is coming, 20. Yeah. So ideally your name spelling should be on 1, 5, 6 or 3 generally, right? Even 2 is fine at times. So we calculate first name as well as total. Second name is not relevant. First name, so in your case Udichi is your first name, and what's your surname? Kataria, right? Yeah, so first name and the total name spelling is relevant. That is how we calculate. So both should not be on 4 or 8, and ideally they should be on 1, 3, 5, 6, 1, 5, 6, 3 or 2, depending on numbers present or absent on your birth chart. And so if my name is Udichi Kataria Divedi after marriage, so I will also calculate Divedi also. You will So only calculate Divedi unless you are writing your entire name. I write Right? Udichi Kataria only, but now after marriage, do I have to consider Divedi also? So you Because should consider the name you are using on your social medias, on your email IDs, etc. So if you are okay, using your new name, then new name matters. If you are still continuing your old name, then your old name matters. okay. Thank you So so much. what is in your Aadhaar card, what is in your PAN card, that really does not matter. What matters is the name which you are using generally. Okay, okay. Yeah. Thank you. सर एक क्वेश्चन है वास्तु का. जी. सर एक फैक्ट्री तो नहीं है लेकिन गोडाउन है पूरा जी. बड़ा, तो उसमें साउथ वेस्ट में गोडाउन में तो मटेरियल फिनिश्ड गुड्स ही आते हैं, तो साउथ वेस्ट में वो फिनिश्ड गुड्स रख सकते हैं? नहीं, माल बिकेगा नहीं. तो फिर नॉर्थ वेस्ट उस इज द जगह पे, बेस्ट. तो उस जगह पे क्या रखे, क्योंकि पूरा गोडाउन ही है वहां, तो मटेरियल उस जगह पे फिनिश्ड गुड्स का ही है. कुछ मत रखो, वो जगह खाली रखो. थोड़ा सर सा ही साउथ जगह वेस्ट होगा में, वो साउथ वेस्ट वाला, उसको खाली रखो. वहां पे अगर जो कोई केयर टेकर या मैनेजर या जो भी है उसको उधर बिठा दो. हाँ दैट्स राइट. तो वो हेवीएस्ट भी होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको स्टोर बना सकते हैं. हाँ, स्टोर बना सकते हो, दैट इज ओके. ठीक, थैंक यू. जी. जी. ओके. सर ये द अपार्टमेंट्स विच यू प्रेफर दैट कि कोई बंदा नया बाय कर रहा हो अपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल प्लॉट्स, तो इंडिविजुअल प्लॉट्स आर बेस्ट फॉर वास्तु. या सो बट हम फॉर एग्जांपल आई कम फ्रॉम मुंबई. मुंबई में इंडिविजुअल प्लॉट्स मिलना मुश्किल है. मुंबई में फ्लैट में ही रहना पड़ता है. या हाउस ओवर वेल्दी यू आर, सो इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी आल्सो. या या So there are some questions in the chat box also. या
Yeah. So see, Sheetal madam, how to calculate life path? As I said, the conductor number जो हमने calculate किया ना, conductor number जो हमने calculate किया, that is your life path number. Conductor number is your life path number. जो हमने पूरा conductor number calculate किया, that itself is your life path number. अभी soul urge number जो है वो, there is another part of numerology which is called as Pythagorean numerology, right? So उसमें हम soul urge number निकालते हैं. How do we calculate soul urge number? ये ज्यादा करके जो है वो marriage etc के time काम आता है, right? So soul urge number is also nothing but it is more linked to your name number. So name number also is effectively called as a soul urge number, right? As far as अभी जो हमने Chaldean सीखा या Chaldean जो discuss किया, so that is your soul urge number. Personality number, ठीक है? Personality number जो है again, what is personality number, right? So that is your hidden number. That is your hidden number, or it is also basically in some numerology calculators we consider your I would say again, yeah, sorry, personality number is your name number, not soul urge number. Personality number is your name number, और soul urge number जो है generally soul number, जो कुआ number हमने निकाला था third lottery, कुआ number is your soul number, right? So again, a disclaimer here, there are different streams of numerology. एक है Vedic numerology, एक है Loshu grid. What we follow in India is a combination of Loshu grid and Vedic numerology. There is an Pythagorean numerology also, which is used more in the Western countries. So calculations may vary from one method to another, but I'm just giving you a broad guideline here, right? International research papers, to my mind, sir, unfortunately, there are not much research papers specifically on numerology. On Rudraksh, there are few, or rather on Vastu, there are few books which are available. On Vastu, you can refer many books which are available on Amazon also. Samudra, I would say. Samudra Shastra is the base of Vastu. Samudra Shastra is one of the main books for Vastu, which is the basis of Vastu, right? So that is how it is. Rahu or Ketu planets, yeah, they are planets. They are called shadow planets. Rahu and Ketu are planets. Yes, they come among the 9 planets, but in a way they are shadow planets as well, right? Yes, sir. How to cleanse Rudraksh? See, Rudraksh cleansing, according to me, before wearing the Rudraksh, it is important to cleanse it. It is very simple. You just keep it in Ganga Jal for 24 hours. It will get cleansed automatically. Now you will say, I don't have Ganga Jal at my home. At my home. Very simple. Use your pure drinking water. आपके घर पे जो पानी है, जो आप पीते हो, फिल्टर करके जो आप पानी पीते हो, एक्वागार्ड का या जो भी हो, आरओ वारो कैंट आरओ, वो पानी लीजिए, उसको रात को ओवरनाइट पानी में रख दीजिए. इफ यू आर क्लेंजिंग इट आफ्टर वेयरिंग, फर्स्ट टाइम पहन रहे हो तो 24 आवर्स उसको पानी में रखिए, और उसके बाद 6 months, once in 6 months you can just overnight keep it in water, clean it in the morning and then wear it, right? I have my video on YouTube on how to wear Rudraksh, right? Do's and don'ts of Rudraksh. If required, I can circulate that to the group, and maybe that can have some idea or insights on Rudraksh. Yeah, I have small question. Yes, sir. Now, how do you correlate your Vastu Shastra with our Patanjali Shastra? Because that also covers some part of the. Yeah, so see, Patanjali Shastra is more about, it is related to more of the health aspects. So as I said, if you have
जो मैंने बोला कि वास्तु डिफेक्ट अगर ये डायरेक्शन में डिफेक्ट होगा तो आपका हेल्थ में इशू हो सकता है, या ये मेल के हेल्थ में इशू हो सकता है, फीमेल के हेल्थ में इशू हो सकता है, एक्सेट्रा। तो पतंजलि शास्त्र जो है it brings in the vastu element and it mixes ayurveda together in the both the sciences together, and they basically bring out how a vastu dosh can, or how improvement of vastu dosh can deprive me from a particular disease, or how that vastu dosh can be or rather how a disease can be cured by curing vastu dosh, because there are certain things where if there is a vastu dosh, kitna bhi medicine kar lo, kitna bhi medication kar lo, wo bimari jayega nahi, and at times it can be fatal also if the defect is say in the northeast direction or central direction. So it is, the Patanjali Shastra is a combination of Ayurveda as well as Vastu. That is the way I look at it. Thank you. Thank you. Yes, sir. Sir, you are on mute. I'm saying, Pathak Saab, thank you very much. Thank you, In a sir. given time, very nice. You have presented very well, and basic things which and people. I think one thing which I would like, if there are consultants, experts, I think we should use them. We should not shy away, because Yeah, what happens, we may have very shallow knowledge. Yeah. What we have, but in-depth knowledge is required. Like Agreed. architecture and other things, they use experts. What the location of, how the big plot has to be divided, Correct. what should be entrance, and where the water source is going to be there. All these things is done very well in India. And even if you see Vastu Shastra, some of the Gujarat I have seen, their houses are on little higher level. Yes. I think that also must be having some Yes. relevant. Yes, definitely. And in Rajasthan, we have bodies which are below the houses itself, Yeah. near the Correct. houses itself. Correct. Yeah. What is the relevant on this? So see, what happens is, it depends on the location. So when I want to reduce the energy of a particular plot or rather, if that is not a great direction for me, what I do is I uplift the plot, because ग्राउंड लेवल से मैं ऊपर लेके गया तो उतना एनर्जी फ्लो में जो है वो गैप आ गया. When it is a positive side, I don't do that. If it is a positive plot, I won't say negative plot, positive plot, but if the area where I am having the entry is a positive side, I will not uplift that. I will keep it grounded only. But when I have no choice, but I don't need those energies. For example, southwest का energy मुझे air and light के लिए नहीं चाहिए. So what I do is I uplift my southwest. I uplift my south, so that वो energies वहाँ पे रुक जाए, because that is my retention zone. I want energies to be retained there. I don't want energies coming from there. So these are all the factors to consider whether the plot should be uplifted or whether I go deep down, right? For example, we have the water elements in the northeast at the underground level also, right? For example, the sewage plant, the rainwater harvesting, all these we have it in the northeast, and even underground level in all these places. So that is how you need to check that what is the element of that zone. Is it a water element? Is it which element is it? And accordingly we decide whether to have uplifted thing or underground thing, or how do we do that. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yeah. Yes, so thank you, sir, for Thank you. explaining topic in simplifying way and for your presentation. So I think there is no more questions. So can we move ahead, sir? Yeah. Thank you very much. Okay. सर मेरा क्वेश्चन चैट में है.
1 second. So question is on Rudraksh. So see, this is not, today we are discussing only numerology and Vastu. So I think this is not the right forum to discuss about Rudraksh. We can take this question separately. Yeah. So is there any more questions from any of So anyone of Vikasji, you? who is the founder of both the topics, I believe Vastu Shastra, the founder, you can say Vishwakarma, Lord Vishwakarma is the founder of Vastu. As far as numerology is concerned, there are multiple founders, because Pythagorean was invented by Pythagoras, Loshu grid was invented by Loshu in China. Vedic, we have again too many. Vedic comes from our scriptures itself, so Ved and Granth itself are the founders. So there are multiple founders as far as numerology is concerned. And even for Vastu, I believe Lord Vishwakarma, जिन्होंने ये पूरा काफी सारे भगवान के महल जो बनाए, या इवन बड़े बड़े जगह जो भगवान के रहने के लिए बनाई. सो विश्वकर्मा इज अकॉर्डिंग टू मी द फाउंडर ऑफ वास्तु. So you read Samudra Shastra as far as Vastu is concerned, it has deep knowledge on the entire basics and even the inception of Vastu. Okay, thank you very much. Over to Sundar sir and team. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So our next session is on 24th of August. ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, and OHSS, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. For reading any of the above book, please contact me, Shushma Tindalkar, on the given contact details. Feedback form, please register on www.sadgunsang.org and go in your login and give your valued feedback to us. We would like to thank you, all the participants and delegates, for your active participation during the session. Please note that if you still have any question, query, and require any clarification that may you require, including any training required by MSME, that is micro, small, medium enterprises. So please contact us on or send email to us on following mail ID sadgunsang@icsasian.com. We feel glad to reply on your question and advise you for training requirements. So thank you once again. Thank you, Umesh sir. Thank you all the participants and delegates. Okay, thank now, you. Thank you very much. It's time to officially close the session. Thank you, everyone.